Hello everyone and welcome to Concept Ka Khel. In this session, our objective is to prepare students for NEET PG and INI-CET examinations, and I'm sharing the important concepts जिनके ऊपर in examinations में question आते हैं. Inside the topic of forensic traumatology itself, आज का हमारा सेशन है range of firing of rifled gunshot entry wound. यानी कि किस तरीके से हम गनशॉट एंट्री वुंड को देख करके उसकी फायरिंग रेंज के बारे में आइडिया लगा सकते हैं. सो लेट्स सी what exactly are we talking about here. What is the mechanism of production of the concept that we are talking? Products which are released from the barrel of the gun produce effects depending upon the distance of fire, which means हम ये कह रहे हैं कि जो भी वेपन के बैरल से प्रोडक्ट निकलता है वो बॉडी पे कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस करता है एंड देयर इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन किस रेंज से वो फायर हुआ है, which means whether that effect is present or not on the body, we can calculate what could be the possible range, right? उसके लिए बहुत ज़रूरी है पहले हम ये जानें कि राइफल के बैरल से या राइफल वेपन के बैरल से क्या प्रोडक्ट्स निकलते हैं. There are four products that we talk about. The first is bullet itself. The second is fire. The third is smoke. And the fourth is gunpowder particles, right? If these products hit the body, they will produce certain effect on the body. और इनसे होने वाले इफेक्ट क्या क्या होते हैं? बुलेट से होता है एंट्री or an exit wound. If the bullet leaves the body, it will produce an exit wound also. Fire से burning or singeing of the area. Smoke से blackening of the area. Smoke जहाँ पे डिपॉजिट करेगी वहाँ पर blackened appearance create करेगी. And gunpowder particle से tattooing. Okay, gunpowder particle से होता है tattooing. इनकी मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस क्या है? That why should we know them? Medical importance is bullet will always produce its effect due to its spin while entering the body. यानी कि बुलेट का इफेक्ट तो हर बॉडी पे दिखेगा जहां पर बुलेट ने स्ट्राइक किया है, राइट? द सेकेंड इज द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड अराउंड द एंट्री वुंड कैन डिटरमाइन द रेंज. ये इफेक्ट कौन से हैं? द इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द अदर मैटर्स जो बैरल से निकले हैं वो रेंज के डिटर्मिनेशन में हेल्प करते हैं. आइए देखते हैं किस तरीके से. So we have said that there are four products which come out of the body. The first one is the bullet itself. So let's say that this is the bullet and this bullet is revolving on its axis, right? The second thing that comes out of the barrel we say is fire, and wherever there is fire there is bound to be smoke. So one more thing that comes out of the barrel is smoke, right? So we have fire, we have smoke coming out of the barrel, and the third thing that is coming out of the barrel is partly burnt or unburnt gunpowder particles. They are also thrown away into the air. So these are partly burnt or unburnt gunpowder particles. Okay, gunpowder particles. Now, what material will produce what effect on the body? We have already seen that.
बट इट डिपेंड्स कि जिस व्यक्ति को वो गनशॉट इंजरी हुई है वो बैरल से कितनी दूर खड़ा है, उस पर डिपेंड करता है कि ये मैटर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे. सो लेट्स से द पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर right in contact with the barrel. This is called as contact range. ठीक है. तो बैरल से जो भी चीज निकलेगी वो बॉडी के स्किन पे कुछ तो इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी बिकॉज द बैरल इज इन कॉन्टैक्ट विद द स्किन, which means this person will have burning or singeing effect. Similarly, this person will have blackening due to the smoke, and similarly this person will have tattooing due to the gunpowder. But because these matters which are coming out of the barrel and the barrel is in contact with the skin, इनके पास में एनवायरनमेंट में फैलने का कोई स्पेस नहीं है, तो ये पार्टिकुलेट मैटर किधर जाएंगे? ये सीधे सीधे उस ट्रैक में जाएंगे जो बुलेट क्रिएट करेगी बॉडी के अंदर. ये स्किन के बाहर फैल नहीं सकते. सो ऑल दिस बर्निंग, सिंजिंग, ब्लैकनिंग एंड टैटूइंग, इफ इट विल बी सीन, it will be seen in the track, not around the entry wound. Okay, so all these things are seen in the track, not around the wound, अगर वो व्यक्ति कॉन्टैक्ट रेंज में है तो. नाउ अब देखते हैं अगली रेंज क्या हो सकती है. द नेक्स्ट रेंज कुड बी हेयर. इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग हेयर, राइट, राइट वेयर द फायर एंड्स. ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्लोज रेंज. तो इफ द पर्सन इज स्टैंडिंग इन द क्लोज रेंज, उसके पास फायर का इफेक्ट होगा, हाँ होगा. उसके पास में स्मोक का इफेक्ट होगा, हाँ होगा. तो विल बी एबल टू सी बर्निंग और सिंजिंग, विल बी एबल टू सी ब्लैकनिंग ड्यू टू स्मोक. उसके ऊपर गन पाउडर का इफेक्ट होगा, हाँ होगा. विच मीन्स विल बी एबल टू सी टैटूइंग ऑल्सो. बट देन बिकॉज फायर, स्मोक एंड टैटू पार्टिकल्स जो इस समय बैरल से निकल रहे हैं, दे हैव द एनवायरमेंटल स्पेस टू स्प्रेड, क्योंकि इस समय बैरल बॉडी से थोड़ी दूर है. So whatever comes out, it will hit the skin all around the entry wound. So all this matter will be present around the entry wound. So simple. Now let's see what could be the next range. What if the person is standing here? Now this is the range where the smoke ends. Smoke इसके बाद नहीं जा पाएगा. This is called as near range, right? इस रेंज में आपको ब्लैकनिंग मिलेगी, आपको टैटूइंग मिलेगी, but you will not be able to see any burning or singeing because fire does not reach here. और ये चीजें हमें कहाँ मिलेगी? अगेन अराउंड द एंट्री wound, अराउंड द एंट्री wound. और इसी नियर रेंज का एक्सटेंशन है वहां पर भी जहां तक गन पाउडर पार्टिकल्स जाते हैं. तो ऑल दिस फ्रॉम हेयर टू हेयर is near range. So even this is near range. जहां पर हमें क्या मिलेगी? अब हमें ब्लैकनिंग भी नहीं मिलेगी जहां टैटूइंग ऐड हो रहा है, वहां पर हमें सिर्फ टैटूइंग मिलेगा अराउंड द एंट्री वुंड. सो इफ you see any question which is showing you that only tattooing is present around the entry wound, we are talking about a near range. If the question says blackening also was present around the entry wound along with the tattooing, we are still talking about a near range, right? When we talk about fire effects along with smoke effects, along with gunpowder effects, we are talking about close range if they are all present around the entry wound.
And if we say blackening, burning, singeing, and tattooing present inside the track, we are talking about contact range. और अगर इसके बाद में कोई व्यक्ति खड़ा है, यानी कि if I say that the person is standing here, he will not have effect of either blackening or burning or singeing or tattooing, but he will only have an entry wound on the body. At this range, only entry wound, which means no burning or singeing, will have no blackening, will have no tattooing. This range is called as distant range. So depending upon what do we see on a dead body of a person who has been shot, we can say what could have been the range of fire. आइए देखते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन. Right, the question which actually came in a NEET PG examination, the question says identify the weapon and the range of shot. हमें weapon भी identify करना है, हमें range of shot भी identify करनी है. If you look at the wound closely, what do we see? हमें एक बहुत ही clear round circular entry wound मिल रहा है. उसके आसपास you can see all this dot 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 lesions. These dot 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 lesions are tattooing. So only tattooing can be seen in this photograph. और कुछ क्वेश्चन के साथ में हमें नहीं दिया हुआ है. We have already seen that if we have this kind of an appearance, it could be a near range shot. Okay, but क्या ये near range shot एक राइफल्ड फायरआर्म से आया है या फिर एक शॉर्ट गन से आया है, हमें ये भी बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में वेपन का मेक भी पूछा हुआ है. ऑल्दो हमने इस स्टडी में अभी शॉर्ट गन्स के बारे में बात नहीं करी है, बट रिमेंबर शॉर्ट गन्स में सिंगल बुलेट यूज नहीं होती, उसमें मल्टीपल पैलेट्स यूज होते हैं. So if the person is going to be struck with a shotgun pellet, he will have lot of pellet openings in the body. So can we see multiple pellet openings in the body? इस फोटोग्राफ को अगर आप दोबारा देखोगे तो हमें मल्टीपल पैलेट्स ओपनिंग नहीं दिख रही है, हमें एक सेंट्रल ओपनिंग दिख रही है विच इज क्रिएटेड बाय अ राइफल्ड बुलेट एंड देन लॉट ऑफ डॉट डॉट्स अराउंड इट विच इज ड्यू टू द tattooing created by the gunpowder particulate matter, which means we are talking about a rifled firearm. So shotgun is out of context. So options could be B and C, and because only tattooing can be seen, the answer is pistol near range, right? That's how we answer questions, by understanding the concept on which these questions are based. Stay tuned, we'll talk more about forensic traumatology and many other aspects of forensic, so that आपकी नीट पीजी और आईएनआई सीटी की प्रिपरेशन में मैं आपका जर्नी कंपेनियन बन सकूं. Keep watching the channel.